हाँ तो मैंने भी ले लिया टोकन मनी, तो आप ही ने तो सिखाया था, पहले धनराशि की झांकी फिर काम। Wait! Did you download Grammarly? Come on, man. Everyone's using it. What's going on, guys, and welcome to banners, panels, and logos as well. And one of the on OBS to be in, you can choose whatever you want here. This is the dark theme. I kind of like this new Yami theme. I think it's very modern looking and nice, and the text pops off the colored backgrounds and all that. I love it. So under this tab, nothing super important. You can have it automatically check for updates on startup, which I leave up just because if there is an OBS update, you know, you do want to get that update as soon as you open the program. Other than that, nothing in here is going to affect your stream significantly. So what we can do is completely skip the rest of that tab. Let's head over to the streaming tab. Now this tab, a little bit more important. This is where you're going to select your streaming service, right? So if you're streaming on Twitch, this is where you select Twitch. If you're streaming on YouTube, this is where you're going to select YouTube. So right here, I'm streaming on Twitch, so I have my service selected as Twitch. The server that you want to use to stream to, you're going to have that set to auto. And right here, I have my Twitch account connected. But if you're just setting this up for the first time, you're going to be able to connect to your account and log into your Twitch account or your YouTube account, whatever it may be. Right here, it says disconnect account for me just because my account is currently connected. It's already connected. Other than that, we can leave the rest of this stuff alone and head on over to the output tab. Another important tab here. So in the output tab, this is where we're going to, finagle with most of the settings for our stream. So output tab, under the streaming tab here, you may want to come up to the top under the output mode and select advanced. It should be on simple when you first start it up. Change it to advanced so we can mess with some settings in here. So under the streaming tab, we're going to come down here and we are going to, the first super important thing here is we're going to look at our encoder. If you're using a 10 series or higher NVIDIA GPU, I suggest using the NVENC H.264 encoder like I'm using here. If not, you can use X264, which will use your processor instead of your graphics card. But if you do have this option, I will always suggest using this option. It's a lot less demanding on your PC's resources. Your frames will be... Do not touch rescale output. Come down here to encoder settings. We want to set this to CBR. And your bitrate is going to be determined by the resolution of your stream. So I'm streaming on Twitch at 1080p 60 FPS, and I have messed around with this quite a bit and found that 8K bitrate is the sweet spot for me, where everything looks pretty clear and I have no issues. If you're streaming at 1080 at 30 FPS, you can drop that down to 6K, no problem. Even 1080p 60 FPS looks fine at 6K. Scrolling down, we have keyframe interval. We want to set that to 2 seconds. Preset, I have mine on max quality. However, if you're getting a little bit of stuttering or your PC seems to be lagging a little bit, you can drop it down to quality. Or क्या आप भी YouTube पर लाइव जाने के दौरान अपनी allow this app to make changes to your device, तो हमें क्लिक करना है जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। उसी के साथ ही जैसे अभी तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा था। नहीं तो आपको क्या आएगा, बेसिकली आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग में, करना है आपके इसके लाइव से, ठीक है। अब ओबीएस को तो नहीं पता कि हम कौन से चैनल से लाइव जा रहे हैं। जैसे मैं इस चैनल से लाइव जा रही हूँ तो इस चैनल के लाइव में ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रीम की दिख रही है, ठीक है। आई होप आप सभी देख पा रहे हैं, ये स्ट्रीम की है। तो इस स्ट्रीम की को आपको करना है यहाँ से कॉपी, और साथ ही ये आपका एक स्ट्रीम यूआरएल है, इसकी हेल्प आपको पड़ सकती है, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रीम की से काम चलाएंगे। तो इसको करना है आपको कॉपी, और फिर हम जाएंगे ओबीएस पर। ओबीएस पर अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, अदरवाइज मैं ये कैसे रिकॉर्ड करूंगी आपको शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइल
फाइल में हम सेटिंग्स पर जा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आपको सेटिंग दिख रहा है, दोनों सेम ही सेटिंग्स हैं। तो सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में ये स्ट्रीम वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये सर्विस वाला ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले तो सर्विस में देखिए जो जहाँ जिससे भी आप लाइव जा रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यूट्यूब पर से हम जा रहे हैं तो यूट्यूब को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये आपको काफी सारे ऑप्शन है। तो प्राइमरी यूट्यूब इंजेस्ट सर्वर, इसको आपको क्लिक करना है। RTMP ये जिस तरह से दिखाया गया है, बैकअप नहीं सिलेक्ट करना, प्राइमरी सिलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद में आपको यूज स्ट्रीम की पर क्लिक करना है और ये जो आपकी स्ट्रीम की है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है वो स्ट्रीम की जो कि आपने यहाँ से कॉपी की है। ओके, मेक श्योर कि आप जल्दी से करें, काफी ज्यादा डिले ना करें क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो जाती है। ओके, उसके अलावा आपको